Hey, class 11, 10th. So this is a Karwa Chauth special question. It is actually you have to understand and help the diagram. Mona observes moon 100 meters away at an elevation of 30 degrees. Okay, and Rajni, her friend, is standing on a roof of a 10-meter high building, observes the moon at an elevation of 45 degrees. Both are on the opposite side of moon, and we have to find the distance of the moon from Rajni. Yes. So this is our Karwa Chauth special question, and this is the position moon P. यहाँ पे हम लिख देते हैं moon, and then we will just position Mona here M, and this is the angle of elevation between moon and Mona. It is angle 30 degree. Now देखो angle of elevation क्या होता है, line of sight and horizontal के बीच में, line of sight and horizontal के बीच में, so this is 30 degree. And it also says moon and Mona के बीच में जो distance है, it is 100 meters. Now it says that the Rajni's position is at 10-meter high building, and also she is on the opposite side of moon. तो रजनी को यहाँ पे हमें place करना होगा, and this is 10-meter high building. So this is 10-meter high building. Okay. Now it says that angle of elevation from Rajni to moon is 45 degrees. So let's make this angle of elevation का same वही fundamental रहेगा. It is between line of sight. Line of sight अब रजनी की position में ये line of sight हो जाएगा, and this is the line parallel to the horizontal. So this is 45 degree here. अब यहाँ पे हम जो बाकी positions हैं इनको हम A, B, C अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं. जो हमने यहाँ पे लिखा, लेट्स राइट इट डाउन. PM is the distance between moon and Mona, 100 meter. The building height is RB, which is 10 meter, and angle of elevation PMA is 30 degree, and angle of elevation PRC is 45 degree. अब मुझे इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, मुझे निकालना डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम रजनी. इट इज PR. तो मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना है, एंड आई कैन राइट दिस डिस्टेंस विद x एज वेल. ओके. अब यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखनी होगी, ये जो डिस्टेंस CA है, दिस इज इक्वल टू RB, 10 मीटर ओनली. We have to use this in the question. So let's start. Let's apply trigonometric ratio in triangle. It is a right triangle, so in right triangle PMA. Okay, so in right triangle PMA, अब मुझे यहाँ पे ये वाला एंगल गिवन है, this is the hypotenuse and this is the perpendicular. So what is the relation which is between the perpendicular and hypotenuse? It is sine theta. So sine 30 degree is equal to, perpendicular is PA and hypotenuse is PM. So sin 30 के लिए हम लिख देंगे 1/2. sin 30 का वैल्यू 1/2. इसको गलत मत करना, पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. एंड PM को हम 2 पार्ट्स में लिख सकते हैं, PC plus CA. Because I know the value of CA 10 meter, I can use it here. So denominator में मेरा है PM को हम लिख देते हैं 100. Now just cross multiply. So 100 upon 2 is equal to PC प्लस CA 10 मीटर है, प्लीज ध्यान दीजिए. सो यहाँ से हम इसको कैंसिल करेंगे, दिस इज 50 एंड 10 विल गेट सब्ट्रैक्टेड ऑन द राइट साइड. सो 50 minus 10 is equal to PC, and PC is equal to 40 मीटर. क्लियर. अब मैंने यहाँ पे ये वाला जो डिस्टेंस है ना PC, ये वाला डिस्टेंस निकाल के रख लिया है 40 मीटर. अब हम लोग नेक्स्ट राइट ट्राइंगल अप्लाई करने वाले हैं. विच राइट ट्राइंगल? यस, इट इज इन ट्राइंगल PCR. ओके, PCR ट्राइंगल में दिस एंगल इज 45. इसके ऑपोजिट जो साइड है, दिस इज आवर हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर, व्हिच वी हैव ऑलरेडी फाउंड 40, एंड वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस PR, and this distance is actually hypotenuse. So again, what I am going to apply? Sine 45. So this is sine 45. This is equal to perpendicular upon hypotenuse. So PC upon PR. And what is the value of sine 45? Yes, it is 1/√2. PC, yes, this is 40. We have already found 40, and divided by PR, x, we have to find PR. Cross multiply. So x is equal to 40√2 meters. So this is our final answer. Distance of moon from Rajni.
distance of moon from Rajni? This is 40 root 2 meter. Final answer को क्या करेंगे आप? Yes, we will block it. So these are not the actual distances. This question is in RD, and the keyword of this question is bird. Okay, and two boys are watching the bird from opposite side in the similar fashion. So I hope you enjoyed this question. Thank